everyone, welcome to OPSC STUDY. My name is Siddharth Panda, and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another set of Polity MCQs. Before going to the topic, OPSC STUDY has launched Geography Optional Foundation course at a minimal price of 5,000 rupees only. जोट्रे कि आपनको complete syllabus coverage with map works and previous year questions analysis मध्य करा जिवो. जो माने लाइव क्लासेस मिस करिवे तांको पय रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये अवेलेबल रहिबो. ता बाद रे आपनको एट द एंड ऑफ योर कोर्सेस आपनको टेस्ट सीरीज मध्ये प्रोवाइड करा जिवो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर्स विल बी ए 7 मंथ ड्यूरेशन कोर्स सो दैट आपनको प्रत्येक वीक रे एटलीस्ट 3 दिन क्लास मिलिबो. आपण वर्तमान ठु थरोली प्रिपेयर हेबा पई गोटे सुवर्ण सुजोग रही अछि. तो आपण डेफिनेटली जॉइन करंतु ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स फाउंडेशन बैच बाय OPSC STUDY. Apart from that, OPSC STUDY has also launched a prelims test series program which must be joined by you people so that practice बहुत रू बहुत आपण माने करि परिबे for the upcoming prelims examination. So coming to the topic, Indian Polity MCQ SET 3. First question is, which one of the following best defines the term state? Which one of the following best define the term state? तो स्टेट कौन बेसिकली स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो माने कि ऑर्गेनाइज्ड ही की थिबे अंडर फॉर्मल गवर्नमेंट अंडर रे विद इन ए स्पेसिफाइड टेरिटरी. तो ताको हमें स्टेट बोली कहि थाउ. तो देखिबा को ऑप्शन टा एटरे होची अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनाइट टेरिटरी. ठीक अछि ओटे तांकर टेरिटरी हे गला. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. यस, द आंसर इज ए. स्टेट कौन ना स्टेट होची आपनकर गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जदि गोटे स्पेसिफाइड टेरिटरी रे गोटे इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट अंडर रे रहउचंती एंड द गवर्नमेंट इज सोवरेन और देन एरिया इज कॉल्ड स्टेट. मन रखितांतु. नेक्स्ट, with reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. This is correct. मन रखितांतु जेते बेले सुप्रीम कोर्ट रो बेंच रे the number of judges will be less at the same time को गोटे स्पेसिफिक केस रो कोन जजमेंट दबा पाई या कोनोसी सुप्रीम कोर्ट रो केसेस को पेंडिंग केसेस को जल्दी खत्म करिया पाई सुप्रीम कोर्ट कोन करंती ना किछि रिटायर्ड जजेस को जो अछंती रिटायर्ड जज मान को से कोन करंती विथ देयर प्रायर कंसेंट एंड विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया they can appoint a retired judge of a Supreme Court or a judge of a High Court who is deemed to be a judge of Supreme Court. जे कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट ऑलरेडी रिटायर्ड ही सारी चंती किंतु तांकर क्वालिफिकेशन थिला कि सुप्रीम कोर्ट रो जज हेई पारथांते सेमिति जज को से एज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे टेम्पोररी पीरियड पय नियुक्ति दे पारंती. तो दिस इज करेक्ट. ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज. यस, मन रखितांतु सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल आपनकर 137 अंडर रे कोन करथाय ना निजर जो जजमेंट अच्छी से जजमेंट को कौन करता है ना रिव्यू करता है. सेम थिंग हाई कोर्ट कौन करे अंडर आर्टिकल 215 कौन होची अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट कौन ना हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने सुप्रीम हाई कोर्ट रो जहां भी जजमेंट्स रहिबो तो सेही जजमेंट गुडा को रिकॉर्ड हे की रहिबो बेसिकली सो दैट कौन ताको परवर्ती केसेस रे कौन रेफरेंस हिसाब रे निया जाई परिबो. जेंति आमे वर्तमान केशवानंद भारती केस को एते वर्ष परे मध्ये रेफरेंस हिसाब रे ग्रहण माने यूज करूछु. सिमिलर दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. एट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हिसाब रे हाई कोर्ट रो मध्ये पावर अछि दैट इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. जेंति गोलकनाथ केस रे आपनकर कोहा हेतला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड करा जाई परिबो नाही, चेंज करा जाई परिबो नाही, एमेंड करा जाई परिबो ताको चेंज करा हला केमति रिव्यू करा हला. सुप्रीम कोर्ट निजर जेंति रिव्यू करके अगेन केशवानंद भारती केस रे कहला कि यस फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड हाउएवर विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. यस, हाई कोर्ट कैन आल्सो रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. तो बोथ 1 and 2. Next we'll move to question number 3. Consider with reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. This is correct. India has only one citizenship. A citizenship by birth only can become the head of the state. No.
हेड ऑफ द स्टेट किए प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट ओनली बर्थ रे सिटीजन बाय बर्थ नो सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन मध्य मन रखिथांतु सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन मध्य कोन से प्रेसिडेंट ही परिबे इंडिया रे तो दिस इज रॉन्ग ही गला थर्ड ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दिस इज आल्सो रॉन्ग कोन फाइन ना गोटे फॉरेनर को फॉर एग्जांपल आपण सिटीजनशिप दो जंती परे जना पड़ला कि से जो सिटीजनशिप नहीं छी बिकॉज ऑफ फ्रॉड हे गला किंबा से यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोन करूची आई मीन इंसल्ट करूची किंबा जदि से रेस्पेक्ट करू नाही किंबा जदि से वार टाइम रे एनिमी रो सपोर्ट नउची या फिर कंटिन्यू 7 इयर्स जाए जदि से इंडिया बाहर रहउची तो ताहले तारो सिटीजनशिप कोन हो टर्मिनेट हे जिवो सो ओनली वन इज करेक्ट बाकी दुईटा आपनकर रॉन्ग अछि Which one of the following factors constitute the best safeguard for liberty in a liberal democracy? बहुत important UPSC question. This is a previous year question. कि which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? See, liberal democracy कौन? ना the democracy that is conservative नुहो. Basically that is talks about freedom, that talks about rights. तो से democracy रे कौन ये चारिटा भीतर को ऑप्शन अछि जोटा बेस्ट सेफगार्ड करूची द लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी को इज इट ए कमिटेड जुडिशियरी नो कमिटेड जुडिशियरी माने होची जो जुडिशियरी गवर्नमेंट पाई कोन थिबो कमिटेड थिबो जदि गवर्नमेंट पाई कमिटेड अछि तो सेटा पार्शियलिटी करिवो से जुडिशियरी सो दिस कैन नॉट सेफगार्ड द लिबर्टी centralization of power never safeguard the liberty because centralization of power also turns there is a chance that it can be turned into autocratic rule or dictatorship. Next, elected government जरूरी नुह कि elected government अच्छी तो that can safeguard the liberty in a liberal democracy. Elected government में आपनकर interfere करि पारे आपनकर rights ही गला liberty ही गला तो ये जिनस ऊपर interfere करि पारे so it is the separation of power because separation of power कौन होची legislative, executive, judiciary. जो legislative किसी भूल कला there is to check this judiciary is there executive कुछ भूल करूची to check this legislature and judiciary is there तो कौन करूचंती प्रत्येक एक दूसरे को कौन करूचंती से माने ना check and balance करूचंती hence the answer is separation of power. Next, under the Indian constitution concentration of wealth violates कौन the DPSP concentration of wealth जोटा होची avoid the concentration of wealth article 39C कोची DPSP रो कि concentration of wealth ही परिबो नाही एंड मन रखि थांतु बाकीटा किछि हो मध्य नाही आपण देखंतु कि right to freedom doesn't link with concentration of wealth right to equality does not किछि तार लिंक ही नाही concentration of wealth so ki concept of welfare that does not concentrate with the concentration of wealth but it violates the DPSP because DPSP talks about absence of concentration of wealth under article 39C. Next, other than the fundamental rights which one of the following part of the constitution India reflects the principle and provision of the UDHR Universal Declaration of the Human Rights 1948 Universal Declaration of Human Rights 1948 रो जो प्रोविजन्स अछि सेटा भितर को प्रोविजन सहित मैच करूची या पार्ट ऑफ आपनकर ह्यूमन राइट रो पार्ट करूचंती ए सब ह्यूमन राइट्स रे कोन व्हाट इज आपनकर यूडीएचआर कोन कहूची ना यूडीएचआर टॉक अबाउट द राइट्स यूडीएचआर टॉक अबाउट द लिबर्टी यूडीएचआर टॉक अबाउट द dignity of individuals so जो आपनकर कोन प्रियम्बल अछि प्रियम्बल जो अछि प्रियम्बल कोन कहे प्रियम्बल को जस्टिस इक्वालिटी फ्रैटर्निटी आउ कोन आपन लिबर्टी ऊपर कथा कोहे तो यस प्रियम्बल इज आल्सो पार्ट ऑफ यूडीएचआर जो प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल अछि तार पार्ट होछि आपनकर कोन प्रियम्बल नेक्स्ट देखंतु डीपीएस जो यूडीएचआर आउ को विषय कथा कोहे ना वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन मनकर वेलफेयर विषय कथा कोहे आपण जान जंदी डीपीएसपी कोन कोहे ऊपर कथा कोहे डीपीएसपी इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट ना आपनकर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर यूडीएचआर ही गला
देन फंडामेंटल यस यूडीएचआर रो आर्टिकल 29 जो अछि कहार यूडीएचआर रो आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ ह्यूमंस and fundamental duties upon Gandhi, it also talks about duties of human. So all the threes are form the parts of your UDHR. Next we will move to a parliamentary system of government is one in which parliamentary system of government very common बहुत important question even UPSC मध्य previous 2020 रे question टा पचारिछि तो देखो आपण एटा ऑलरेडी आरआई रे थरे आसी सारिछि थरे आपनकर CGL रे मध्य आसी सारिछि question टा and the same question has also been repeated in your OPSC previous year question रे देखिबे same question repeat हिची बहुत important question कि parliamentary system of government कोन where the government is responsible to the Lok Sabha in particular and parliament in general the responsible थिबा parliament general रे Lok Sabha को particular रे that is article 74 मन रखिथिबे article 74 and 75 talks about this only so the government is responsible to the parliament and can be removed by it. Yes, jodi no confidence motion pass ho gala then it can remove the government. That is answer B. Which part of the constitution of India declares ideal welfare state? Welfare state mane kotha kohila mane you will know about DPSP. Consider yes DPSP कोट रु आसीछि ना आपनकर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु मन रखि थांतो एंड आपनकर डीपीएसपी को आपनकर के ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोन कहिथिले ना इट्स ए नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी क्वेश्चन आछि कोन डज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर नो basic structure is an invention of what na apankara judiciary invention eta by Keshavananda Bharati case of 1973 joti apankara supreme court kahithila ki basic structure forms a part of the constitution however constitution does not defines particularly define kare nahi what is basic structure however supreme court through its different judgments define karichi basic structure kono jenti apankara judiciary independence he gala judicial review he gala apanकर supremacy of the constitution rule of the land he gala apanकर separation of the power he gala ei jo सब जिंस secularism he gala ei सब जिंस forms the part of your basic structure. Next the constitution provides for judicial review again I said the constitution does not provides for judicial review though yes judicial review safeguards the citizens liberties and preserve the ideal on which the constitution is based however constitution does not provides for judicial review jota it forms a part of your basic structure and judicial review forms a part of the basic structure apanଙ୍କର supreme court judgment रे आस्तला कोटा मन रखु जानतु Minerva Mills case of 1980 जोटा सेठी supreme court directly कहितले yes judicial review forms a part of your basic structure so neither one is correct nor two is correct. In the context of India, which one of the following is the characteristics of appropriate for bureaucracy? ये चारिटा ऑप्शन अछि कोटा ब्यूरोक्रेसी को एग्जैक्टली डिफाइन करूछि से ब्यूरोक्रेसी कोन ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स मनकर काम होछि लेजिस्लेचर जो लॉ पास करिवे जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करिवे से पॉलिसी को बेटर एग्जीक्यूट करिवाटा so an agency for widening the scope of parliamentary democracy no the bureaucracy does not involve in widening the scope of parliamentary democracy that is the work of legislature. An agency of strengthening the structure of federalism no federalism structure को strengthen करिवार काम होची constitution plus आपनकर central government and state government that is cooperative federalism. An agency of facilitating the political stability and economic growth no an agency for implementation of public policy this is correct. Next we'll move to question number 11 with reference to the provision contained in part 4 of the constitution of India which of the following statement is or are correct. Part 4 of constitution is the DPSP. Now this shall be enforceable by the courts manokidantu they are not enforceable by the courts enforceable nohanti they shall not be enforceable by the courts yes this is correct.
Now, the principle laid down in this part are influence the making of laws by the state. Yes, jodio DPSP do not and they are not enforceable in the courts. However, court expect even they are helping the courts in finding the constitutionality of any law, and they are also directed towards the state. Basically state को direction थाए DPSP रो कि those principle must be included in the laws that are made by the state. Example दूची अपन को कि for example your prohibition of liquor sale ban करिबा liquor ban जोटा सेटा आपनकर बहुत सारा अपन देखिबे बहुत सारा स्टेट जेंति बिहार हे गला गुजरात हे गला दे हैव डिक्लेयर्ड दिस स्टेट एज ड्राई स्टेट. तो एई जो प्रिंसिपल अछि सेटा तांकर लॉ रे इंक्लूडेड हला. सिमिलरली एब्सेंस ऑफ व्हाट योर concentration of wealth and redistribution of wealth, article 39b 39c, those are also अपन मन रखिथांतु 39b and 39c कोन they are the article 39b 39c under DPSP जोटा अछि absence of concentration of wealth and your redistribution of wealth जोटा they are supreme to article 14 and article 19. Even माने article 39b और c को implement कला बेले there is nobody talks about right to equality or a right of freedom basically. तो ये सब जो आर्टिकल्स और एग्जांपल अपन दे परिबे मैटरनिटी लीव जोटा अंडर आर्टिकल कोन 42 जोटा अछि मैटरनिटी लीव ता सेटा मध्ये अपन को इंक्लूडेड हेछि लॉ रे. सो ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट. सो अपन को करेक्ट आंसर कोन हबो 2 and 3. द आंसर इज डी. These are the set of questions we have discussed today. Hope you have liked the video. Thank you very much.